Chelsea, what a start to preseason. Yes, start नहीं second match, लेकिन भाई it is charity FC. Yes, charity FC it is because हाँ वही है हमारा signature style और वही हमने किया है चार्लोट FC के साथ. It is Charlotte FC won, Chelsea won, but we lose on penalties and this is a real thing. वो हुआ है और लास्ट मिनट में हमने गोल दिया. कैसे दिया हम बात करेंगे, सो बने रहना लास्ट तक because there was a surprise. The match जो सुबह सुबह शुरू होने वाला था in Indian Standard Time, and of course for people in the UK it was supposed to start just around midnight, but it started beyond that as well क्योंकि there were thunderstorms. Yes, there were thunderstorms और उसके लिए मैच शुरू हुआ 1 घंटे लेट और literally evacuation हुआ and what not. भाई, you have to commend the Bank of America Stadium, very very well planned. That of course it wasn't pre-planned लेकिन planned at the moment, so that's what I would say. Recommend them very highly in terms of the stadium. लेकिन having said that, स्टार्टिंग 11 क्या थी चेल्सी का. हाँ, फाइनली मैच स्टार्टेड एंड मैं सोच रहा था भाई यहाँ तो रहीम स्टर्लिंग शुरू करेंगे, लेकिन नहीं, he wasn't starting. And yeah, it wasn't too bad of a starting 11. I would say यार काफी strong 11 थी compared to last match में जो starting 11 थी, and that's the reality मेरे ख्याल से. आप कमेंट करिए नीचे, were you disagreeing? Because हाँ, हम इतने सारे प्री सीजन मैचेस नहीं खेल रहे तो you would say नहीं, we should have probably done better there, we should have started even more stronger players. But let's be real भाई, यहाँ पर if I'm not wrong, Emerson or Alonso worked well in a left centre back, left wing back kind of a combination last match में. वो continue किया और looks like it very clearly कि Thomas Tuchel 5 at the back ही जाएंगे, rather 3 at the back ही जाएंगे. हाँ, लग रहा था 4 at the back to begin with, लेकिन they switchly kind of moved to that 3 at the back. हाँ, you can also say that Marcus Alonso and Callum Hudson-Odoi were really more like wingers and not right wing backs and left wing backs. लेकिन हाँ, the fact is, यार, on paper we were still a 3-4 1-2 or 3-4, 2-1, जैसे भी आप बोलना चाहो, with Pulisic and Ziyech starting. Yes, बहुत इंटरेस्टिंग है. Ziyech has started both the games if I'm not wrong. Correct me if I'm wrong. लेकिन हाँ, subs bench पर थे Sterling, Gallagher, बहुत impressive performance in the first match. Like, he was on the subs bench as well. हाँ, for those of you wondering, Koulibaly कहाँ है भाई? He has not trained, I believe, yet with the proper first team. So इसलिए Colwell was there on the bench, which was good to see as well. लेकिन हाँ, of course, with Thiago Silva being there, of course, it was great start. लेकिन Jorginho was the captain. In fact, Jorginho मेरे ख्याल से first half में काफी अच्छा खेला उन्होंने. I was really impressed with Jorginho, and of course, Batshuayi starting. तो आई वाज लुकिंग भाई, Batshuayi as a goal scorer, मे बी यार एक गोल मिल जाएगा और उनका वैल्यू बढ़ जाएगा, so that we can get a bidder for him finally. लेकिन भाई नहीं, Batshuayi missed a sitter. लेकिन हुआ क्या, बैक बैक आया बैक, और इट वाज a rebound, और it was who? Christian Pulisic, Captain America, obviously भाई. चार्लोट में हो रहा था मैच, नॉर्थ कैरोलिना, he had to score. So yes, Christian Pulisic scored and he's looking sharp. मैं बोलना चाहूंगा इन प्री सीजन, नॉट जस्ट वो चिकने लग रहे हैं, बट हाँ अच्छे भी लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल. बट हाँ, हाफ टाइम में इट वाज 1-0. मैं सोचा भाई दिस इज गोइंग टू बी अ केक वॉक. हाँ, डेफिनेटली वी डिड नॉट really play well. It was more like a training session. Having said that, Ziyech was very good again. बहुत अच्छे crosses. We will really miss Ziyech यार. I hope we don't sell him. I really hope somehow, क्योंकि हमें नहीं मिले Dembele और Rafinha. और हाँ, बने ना लास्ट तक, because हम quickly update देंगे of Jules Kounde as well. So definitely stick on. लेकिन सेकेंड हाफ में क्या हुआ, we made 10 changes और आए भाई Mason Mount as captain. Of course, every player in the team changed. The difference was यार we had Mendy in goal. That was not the change, compared to last match. तो 11 changes नहीं हुए. Having said that, भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग. तो क्या थी सेंटर हाफ की पार्टनरशिप? It was left center back Malang Sarr, central back was Levi Colwill. इंटरेस्टिंग ना. और राइट सेंटर बैक चालोबा, वेरी वेरी यंग सेंटर बैक पार्टनरशिप हो रहा था. लेकिन what about the wings? Yes, Kennedy was looking a little bit sharp in last match, but played right wing back and left wing back Khele Chilwell. Midfield was even more interesting because for me, by Gallagher came on, but with whom? Ampadu जिन्होंने दिखाया था last match में he can get those passes in, very good. और हाँ, did he play well though? Questionable for me. Questionable, हाँ, थोड़ा questionable है. I'll come to that why. लेकिन हाँ, Sterling, Havertz and Mount started up top. Havertz यार काफी leggy लग रहे for me, for whatever reason, looking very leggy. Mount is looking really sharp. Sterling, in my opinion, had a decent outing. Second half में he got a almost penalty. हाँ, free kick just before the line, he was fouled और मिला हमको free kick, लेकिन हम convert नहीं कर पाए. और talking about Ampadu,
जहां तक मुझे याद है आमपडू का एक मिस्टेक था विच डायरेक्टली ऑलमोस्ट लेड टू अ चार्लोट गोल एंड इन फैक्ट लास्ट में व्हेन केक वॉक हो रहा था एंड वी काइंड ऑफ डिड वेरी वेल टू काइंड ऑफ जस्ट डिफेंड, क्योंकि यार सेकंड हाफ में लेट्स बी ऑनेस्ट फर्स्ट हाफ में वी वर द बेटर टीम जस्ट अबाउट। हाँ उनके चांसेस थे इन काउंटर अटैक, द स्ट्राइकर वाज नॉट टू बैड लेकिन फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं थी। फिर भी फर्स्ट हाफ में भी बेटर, सेकंड हाफ में आर्ग्यूबली दे वर द बेटर टीम और आर्ग्यूबली दे डिजर्व्ड एक गोल और वो आया कि नहीं, एब्सोल्युटली आया, मैंने बोल दिया ऑलरेडी। और इन व्हाट फॉर्म भाई, एक यंगस्टर आया और भाई ही जस्ट टुक अ शॉट फॉर व्हाटएवर रीजन, लास्ट सेकंड्स ऑफ द गेम बाकी थे और चालोबा भाई अपना हाथ ऊपर करते हैं कि क्या ही तो यार आजा आजा आ बैल मुझे मार, वो वाली पॉइंट थी। लेकिन चालोबा गिव्स ही गिव्स अ पेनल्टी एंड फॉर मी यस आई नो दिस गोज जस्ट टू ऑल द कॉबम सेक्शुअल्स राइट, लेट्स गेट इट राइट। ऑफ कोर्स आई लव अ चालोबा एज वेल, लेकिन भाई मैं वैसा नहीं हूं आप लोग के जैसा घोड़ों घोड़ों जैसे जो सीधा ही देखते हैं, दैट इज समथिंग व्हिच माइट ऑफेंड यू बट दिस इज रियलिटी। द फैक्ट इज चालोबा इज नॉट रेडी टू प्ले फर्स्ट टीम फुटबॉल एज अ स्टार्टर फॉर अ टीम व्हिच इज वांटिंग टू चैलेंज फॉर द प्रीमियर लीग और फॉर द चैंपियंस लीग और फॉर द कप्स। वो रियलिटी है, टोमोरी का भी वो रियलिटी था जब लैम्पार्ड नहीं खेल रहे थे। लेट्स गेट इट राइट एट दैट पॉइंट। ओके आप हर एक सेकंड देखो चालोबा का, ही मेक्स मिस्टेक्स, और ये clear mistake. Yes, it's just pre-season. Why am I reacting so much? But in that back three, wasn't he one of the senior members? Think about it. So I think वो एक बहुत ही नाइव था. Imagine if Aspilicueta would have done that. नहीं ना. Having said that, भाई आज Aspilicueta appear ही नहीं हुए. No Aspilicueta at all from what I remember. Correct me if I'm wrong. लेकिन हाँ, what about Warner? Warner भी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे यार Warner. तो काफी काफी इंटरेस्टिंग दैट। इज इट बिकॉज कोई ऑफर आया है क्या? इज इट जस्ट अ रेस्ट? इज इट जस्ट अ रोटेशन? कि हमारे पास इतने प्री सीजन मैचेस है नहीं है, नो दो और मैचेस है बट अगेन नॉट दैट मेनी कंपेयर टू मे बी लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड और इवन स्पर्स। तो आई वुड से दैट थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि ये लोग दोनों स्पेशली एस्पिलिक्वेटा एंड वार्नर बिल्कुल भी अपीयर नहीं किए। बट अगेन ओवरऑल आई वुड से यार हाँ 1-1 हुआ। आई थॉट मैच खत्म होगा लेकिन नहीं, मैच खत्म नहीं हुआ। हाँ ऑफ कोर्स भाई ड्रामा चाहिए था और लग रहा था ऐसे चेल्सी प्लेयर्स पूछ रहे रेफरी को भाई हो जाए पेनल्टीज हो जाए। और आई डोंट नो इफ दैट वाज प्री प्लान, वाज दैट इन द फॉर्मेट, कमेंट करिए अगर आई एम मिसिंग समथिंग हियर। बट या दैट वाज रियली रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी। हाँ हैविंग सेड दैट भाई एक जन जो पेनल्टी लिया चेल्सी के लिए बहुत अच्छा लिया वो है राहीम स्टर्लिंग, न्यू बॉय। टॉकिंग अबाउट हिम भाई, टीम शीट जो निकला था ना शुरू में, आई डोंट नो व्हाट तो टीम शीट लिखना था उसमें राहीम स्टर्लिंग लिखे थे फॉर व्हाटएवर रीजन, होता है। लेकिन अदर पेनल्टीज कैसे थे? यू नो व्हाट, कॉर्नर गैलेगर हर हर प्री सीजन में एक होता है, एक चेल्सी यंगस्टर ऑलवेज मिसेस अ मेजर पेनल्टी। हाँ मेजर पेनल्टी नहीं था ऑफ कोर्स प्री सीजन फॉर चार्लोट एफसी, यार वो तो दे विल टेल द ग्रैंड चिल्ड्रन दैट भाई कॉर्नर गैलेगर मिस्ड अ पेनल्टी अगेंस्ट अस और व्हिच लेड टू अस winning. Yes, they won the match. They converted all their 5 penalties. Of course, Mendy यार जानते हैं हम पेनल्टी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। और आज सब्स्टिट्यूट भी नहीं किए थे फॉर व्हाटएवर रीजन। फेयर इनफ क्योंकि वी हैड अ यंग गोलकीपर ऑन द बेंच राइट। सो वो भी फेयर इनफ है। लेकिन आई डोंट नो मैन, आई वाज लाइक नहीं भाई मतलब देयर हैज टू बी समथिंग व्हिच हैज टू बी गिवन हियर बिकॉज यार लेट्स बी ऑनेस्ट, एज मच एज भाई चेल्सी आर लाइक लुकिंग एट प्री सीजन एज ट्रेनिंग रियली टू बिल्ड अप द फिटनेस, हम खेलने वाले एवर्टन के साथ यार व्हाट लिटरली 1.5 हफ्तों में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और आर वी देयर येट? नो वी आर नॉट देयर, वी आर नॉट देयर येट, नोवेयर क्लोज इवन। तो हमें चाहिए प्रॉपर फर्स्ट टीमर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। लेट्स सी, लेट्स होप अगेंस्ट आर्सेनल वीकेंड में वी हैव कूलिबाली इन एंड वर्नर कम्स बैक। ऑल्दो मैं फैन नहीं हूं आप जानते हो, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा भाई आई थिंक दैट्स प्रोबब्ली ओनली फेयर राइट। बट हैविंग सेड दैट let's see man, I don't know, I think there were other players also who did not feature at all, आप बोल सकते हो। I don't know, मैं Barkley, yeah, Ross Barkley wasn't there of course, लेकिन वो injured थे I believe। Kepa not being on the bench also was kind of surprising। लेकिन हाँ, coming to the transfers and again people do let me know who was your man of the match, who was most impressive first match में। I think for me Gallagher was in this match। बहुत मुश्किल होगा टू पिक वन प्लेयर, मे बी पुलिसिक, मे बी जियक, दैट्स व्हाट आई वुड से। मतलब वो एक कटिंग एज काइंड ऑफ क्वालिटी था ओवर अदर प्लेयर्स एट मोस्ट। आई डिडंट सी यार कोई भी एक प्लेयर था जो लाइक वाओ मतलब इंप्रेस किया हडसन ओडॉय एज ऑलवेज भाई नॉट इम्प्रेस एट ऑल फॉर मी, नॉट इम्प्रेस एट ऑल। अलोंसो इनफैक्ट वाज मच बेटर, मैं सच में बोलता हूँ था। चलो ट्रांसफर विंडो में क्विकली टच कर लेते हैं क्या हुआ है ओवरनाइट ये हुआ है। हम बात ही किए थे जूल्स कुंडे और किम्पेम्बे के बारे में कल एंड अ लॉट मोर, डू चेक इट आउट अगर आपने मिस किया along with FIFA stream, FIFA 22 that is। But Jules Kounde, overnight a 55 million pound bid has gone from Chelsea or that has been accepted।
So looks like Jules Kounde is coming to Chelsea, but is it over yet? 55 million pound is what, 60 million euros, which is like technically very close to their evaluation. उनकी थी शायद 65 million और हम गए 60 million, or it has been accepted, but it's the bottom line. But I think it's not the end of the story because Barcelona के economic lever एक आज release हो रहा है, तो they might get some money or they might bid by the end of the day. So stay tuned for more news. Do with that bell notification icon. आपको क्या लगता है, Jules Kounde where will he end up? आई फील यार इस बार हमें नहीं होने वाला धोखा, जस्ट लाइक रफीनिया ना, धोखा नहीं था, बट यू कैन से दैट अनलकी ना। तो हाँ, इस बार नहीं होने वाला बिकॉज आई फील दैट, हाँ, पर्सनल टर्म्स आई एग्री विद बोथ द क्लब जब जूल्स कुंडे की बात करो, लेकिन यार लेट्स बी ऑनेस्ट दैट चेल्सी यार हैज टू गो गंग हो विद ऑफर। अगर बाय चांस बार्सिलोना आती है, आई थिंक वी माइट गो विद अनदर बिड, लेकिन मुझे लगता है बार्सिलोना मे नॉट बी एबल टू पे द 60 मिलियन यूरोस, दैट्स जस्ट माय गट फीलिंग। एंड इवन एज पर रिपोर्ट्स, भाई हम लोग ऑफर कर रहे हैं जूल्स कुंडे को अराउंड 10 से 12, I think 10 to 12 million in terms of the salary per year, that is in euros. Lekin Barca, I think, are giving just about 7. So there is a difference. Correct me if I'm wrong. But again, do not forget, we will be back with FIFA streams as well on Almighty Sports Plus and a lot more. So stay tuned. Hit that bell notification icon if in case आपने नहीं किया है. But do you think Chelsea has done enough in preseason and it's just practice? Yeah, don't take it so seriously. और आप बोलते हो नहीं भाई, we need to buck up. We need to pull our socks. We need to be, in gear 2 and 3, not gear 1. हमें करना चाहिए ज्यादा on the pitch, and that's something that maybe our next match में मिले, because we are going to play hopefully a lot more first teamers for more minutes and not just one half. देखते हैं भाई, अब whatever it is भाई. Meanwhile, I don't know what has happened with the Arsenal's match भाई. वहां पर it was 1-1. I don't know what has happened. Let me know what has happened in that match, क्योंकि यार वो भी FC series का पार्ट है, right, technically. तो I don't know what happened. Man City, by the way, as I'm recording this, they are beating Club America 2-1. Arsenal, they have beaten Orlando City 3-1. So good for them, bhai. We are playing Arsenal next. So let's see who scores, who does not. Hopefully, we will. Chelsea, bhai, come on. We'll be back. And yes, we have to get ready very fast. Thank you and see you today later live.